artificial intelligence. In our everyday life, we use many artificial intelligences like we use Gemini, Perplexity, ChatGPT, Emergent, so on and so forth. And we use them to make our life easy, to perform many good tasks. Like if you're a student like me, you will use Notebook LM to prepare presentations. You will look how to improve your grammar, how to improve your communication skills, and all those things. But in today's era, it's important for us to learn how actually artificial intelligence works, because we all know what's an artificial intelligence. It's like a language learning model created by many programmers by learning machine learning, all those things. But how it actually functions? First of all, if we need to understand the core concept of artificial intelligence, how it actually functions, we need to first understand that artificial intelligence is not an intelligence. It works only on two main principles. Agar wo principles nahi, artificial intelligence is then dead. First, it's pattern compression plus predicting at scale gives us artificial intelligence. To understand first the pattern compression, let's take an example. For example, आपने 10,000 आर्टिकल्स पढ़े, तो उन 10,000 आर्टिकल्स में आपको कितना ही याद रहेगा? आपको वो वाली चीजें याद रहेगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, some of the most important things from that article. Like you will learn the dates, you will learn the incidents, you will learn some more phrases that are used in the articles. You will learn that idea. You will not remember everything. You will just learn the core, the central idea. Okay, so ये सब चीजें आप understand करेंगे. And that means you compress all your information into an understanding. So does the artificial intelligence. Artificial intelligence क्या करता है? ये हर कोई चीज हमें नहीं देता है. हमें लगता है कि it gives us the every information. No, it does not give us the every single information. It gives us the most highlighted points. It connects the patterns and give us the output जिसके लिए हम wait करते हैं. Second thing I want to talk about it is predicting at scale. अब इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह याद करते हैं कि आप सपोज करें कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई क्वेश्चन पूछा, सन कब अराइज होता है? सन अराइजेस इन द, आप फिर डैश लगा दे, सन अराइजेस इन द, किस डायरेक्शन में सन अराइज करता है? या डायरेक्शन आप नहीं लिखो, आप लिखो द सन अराइजेस इन द डैश. सो जब वो प्रोसेस करेगा उसको, तो वो प्रेडिक्ट करेगा, ना कि आपको करेक्ट आंसर देगा, क्योंकि वो पहले आर्टिकल्स को चेक करेगा, वो हर कोई जो भी उसके पास चीज होगी उसको कलेक्ट करेगा, देन आपको प्रेडिक्ट करेगा. वो प्रेडिक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आंसर ईस्ट है, तो वो उसको मोस्ट प्रेडिक्टिंग कैटेगरी में रखेगा, वेस्ट को वो लीस्ट कैटेगरी में रखेगा, लो प्रेडिक्शन की कैटेगरी में रखेगा. दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क. वो हमें कभी सही आंसर नहीं दे सकते. दैट्स व्हाई वी से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट करेक्ट ऑल द टाइम. यू आस्क हिम लाइक, आप उसको IIT JEE का क्वेश्चन पूछो, यू आस्क द क्वेश्चन ऑफ ChatGPT फ्रॉम HC Verma से कोई क्वेश्चन पूछो, इट विल नॉट गिव द फुल आंसर. दैट मीन इट गिव्स यू द प्रेडिक्शन. ये प्रेडिक्ट करता है, आंसर नहीं देता है. सो लेट मी समराइज दिस वीडियो फॉर यू. In today's video, we learned that artificial intelligence is no more an intelligence, that predicting at scale plus pattern compression, it gives artificial intelligence. हमसे झूठ कहा गया था कि artificial intelligence एक really में एक intelligence है. It is a predicting machine. इसीलिए never take suggestions from artificial intelligence. Just think from your own mind. Just we need to use our critical thinking that's present in our mind. So this was all for today. I hope you understood something from this video. Myself, Muteeb Shah, signing off.